Dear students, today we are going to discuss eigenvalues and eigenvectors. Definition है if A is an n cross n matrix over R, then the scalar lambda is called an eigenvalue of A. तो students, आपके पास एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड लैम्डा कोई स्केलर है। जो लैम्डा है ये क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू ऑफ ए। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर v belong to n or n such that av is equal to lambda v. In this case, v is called an eigenvector of a corresponding to the eigenvalue lambda. तो स्टूडेंट्स ए वी बराबर है लैम्डा वी के एंड ए वी बराबर है लैम्डा आई वी। दिस implies that a माइनस लैम्डा आई इंटू वी बराबर है 0 के। a माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर so that determinant of a minus lambda I is equal to a minus lambda I का मॉड है। स्टूडेंट्स इसमें आपने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो डिराइव कर ली है। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा I is equal to 0। तो नेक्स्ट है आपके पास इसके रिमार्क्स हैं एंड आप इनको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। These are very important points related to eigenvalues and eigenvectors. For the n cross n matrix A, the equation P steri lambda is equal to A minus lambda I mod is equal to 0। ये क्या है? पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। सो इट हैज n रूट्स। जितनी डिग्री की कोई पोलिनोमियल होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो सेकंड है हमारे पास पोलिनोमियल p lambda can be written as p lambda is equal to lambda 1 minus lambda, lambda 2 minus lambda, lambda n minus lambda up to so on lambda n minus lambda is equal to minus 1 की पावर n lambda n minus into lambda 1 plus lambda 2 plus up to so on lambda n into lambda n lambda power n minus 1 plus up to so on plus minus 1 की power n lambda 1 lambda 2 up to so on lambda n. For lambda is equal to 0, the equation 1 and 2 become pq is equal to a mod is equal to determinant a is equal to lambda 1 lambda 2 lambda 3 कोफिशिएंट ऑफ माइनस 1 की पावर n minus 1 lambda की पावर n minus 1 for lambda is equal to 0, the equation 1 and 2 becomes pq is equal to a mod is equal to determinant of a। determinant a इक्वल होगा lambda 1 lambda 2 up to so on lambda n, which is the sum I is equal to 1 to n ai of the main diagonal elements of the matrix A. The equation p lambda is equal to a minus lambda I mod is equal to 0 is called the characteristic equation of A।
The roots of p lambda is equal to 0 are called the eigenvalues of A. The vector V satisfying the equation AV is equal to lambda V are called the eigenvectors or characteristic vectors of A corresponding to the eigenvalue lambda. Next example number 15. Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix C is equal to 1, 1, 2, 4. Characteristic equation of A is P lambda is equal to A minus lambda I mod is equal to mod 1 minus lambda 1 minus 2 4 minus lambda is equal to 1 minus lambda to 4 minus lambda plus 2 is equal to 0. Lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0. Then स्टूडेंट्स इसके जो रूट्स आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे लैम्डा 1 बराबर होगा 2 के एंड लैम्डा 2 बराबर होगा 3 which are eigenvalues of A. The eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda 1 बराबर है 2 के is given by AV1 बराबर है 2V1 that is 1 1 minus 2 4 x1 y1 is equal to 2x1 y1 where v1 बराबर है x1 y1. Thus x1 y1 is equal to 2x1 minus 2x1 plus 4y1 is equal to 2y1 from 2x1 is equal to y1 and 3 gives you a y1 बराबर है x1. Take x1 is equal to y1 is equal to 1. Then 1 1 is an eigenvector. All other eigenvectors are scalar multiples of v1 is equal to 1 1. The eigenspace E2 of A corresponding to the eigenvalue lambda 1 is equal to 2 is generated by 1 1. It is subspace of R square. The eigenvector V2 of A corresponding to the eigenvalue lambda 2 is equal to 3 is given by that is 1 1 minus 2 4 x2 y2 is equal to 3 into 3 column vector x2 y2. x2 plus y2 बराबर है 3x2 के माइनस x2 प्लस 4y2 बराबर है 3y2. ये इम्प्लाई करता है कि y2 बराबर है 2x2 के. For x2 is equal to 1, y2 is equal to 2. 1 2 is the eigenvector of lambda 2 बराबर है 3 के. Other eigenvectors corresponding to lambda 2 बराबर है 3 are all scalar multiples of 1 1. Eigenspace E3 corresponding to lambda 3 is generated by 1